Santoshi, carry on. A very pleasant good morning to everyone present over. I feel exceedingly happy and glad to say that this is Santoshi Singh from Southeastern Railway, along with Shalini Jain, Pre-ALD Guide, Madhya Pradesh State. For the fourth webinar on SDGs topic number 7th and 9th. It makes me feel immense pleasure to announce that we have some phenomenal figures joining us today to enlighten us with their gracious presence. Earnestly, I would like to welcome our guest of honor, Shri Ashok Janwade sir, our chief guest, Shri Prem Prakash Sharma sir, and resource speaker, Shri Supreet Balaji sir. जन जन में यही संदेश फैलाना है कि हमें ऊर्जा को बचाना है. So let's get started. And on that note, I would request you all, please stand up for the BSG prayer. Please be standing in Savdhan position, and I would request Dhanraj sir to please lead the BSG prayer. दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ज्ञान में आओ प्रभु आंखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, बहा दो प्रेम की गंगा सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वो सेवक चर बना देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना. विश्राम. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए. जीवन में प्रत्येक पर्व, कार्य, अनुष्ठान दीप के बिना अधूरा है. दीपक उत्साह, उल्लास, शांति, सुख, समन्वय, आरोग्यता, स्नेह और आध्यात्मिक एवं आत्मिक शांति तो प्रदान करता ही है, साथ ही सरसता, पवित्रता, पुण्यता के अक्षय कोष से जीवन को अपना. भारतीय परंपरा में दीप प्रज्वलन का महत्वपूर्ण स्थान है. अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के अतिथि जन से निवेदन करती हूँ कि वर्चुअली दीप को प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें. साथ ही मैं धनराज सर से निवेदन करती हूँ कि कृपया हमारे अतिथियों का सहयोग करें. Thank you. So now I would like to invite Mr. Siddharth Mohanty sir, Project Officer, Bharat Scouts and Guides National Headquarters, for the welcome address. Sir, the stage is yours. Thank you, madam. Good morning to all. On behalf of the Bharat Scouts and Guides National Headquarters, President Dr. Anil Kumar Jain, sir,
and Chief National Commissioner Dr. K.K. Khandelwal ji, Director Bharat Scouts and Guides, and all the professionals of Bharat Scout and Guide. I welcome to our today chief guest and guest of honor, and all the dignitary, those who are doing directly and indirectly support for this fourth webinar on Sustainable Development Goal of Central and Western Region. First of all, I welcome today our today chief guest, Prem Prakash Sharma ji, Chief Executive Officer, Jilla Panchayat, Chhattisgarh, as well as the State Commissioner Scouts of Chhattisgarh. Welcome you, sir. And I welcome the guest of honor, Ashok Janwade sir, State Secretary of Madhya Pradesh. नमस्कार सर, आपसे पहले बार मुलाकात हो रहा है। मैं भी पंचमढ़ी में था। पंचमढ़ी तो आपका ही जगह है, मध्य प्रदेश हमारा नेशनल ट्रेनिंग सेंटर का स्टेट है। तो आई वेलकम टू द रिसोर्स स्पीकर सुप्रीत बालाजी, रीजनल यूथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन, एंड आई वेलकम Salini Madam ji, and I welcome Santosh Singh, and our host of the this webinar, Madam Shivangi Saxena, Assistant Director, Central and Western Region, Headquarter at Godpuri, and as well as my friend Mr. Dhanraj Seni. I welcome everybody for this very nice webinar for Sustainable Development Goals 7 and 9. Yesterday, I just received a message from the Assistant Director, Madam Shivangi Madam. Then I am happy, and this is a credit goes to Madam Shivangi Madam, and she wanted to just welcome to the participants and guests for this webinar today. Once again, welcome to all. I just wanted to just inform one thing. The Bharat Scout and Guide and doing National Adventure Program all over the India. We are having 5.5 area till now: Panchmadi, Gatpuri, Darjeeling, Goa, Manali, Dehradun. May I request everybody, please come and please send some non-Scouts people to add the membership of the Bharat Scouts and Guide through Adventure Institute. Thank you once again, and once again thanks our chief guest who has given the time, because it's office hour, but even though he has given the time, chief guest and guest of honor are everybody. Thank you one and all. थैंक यू मोहंती सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब बेला है हमारे अतिथि उद्बोधन की। तो मैं आज के वेबिनार के विशिष्ट अतिथि श्री अशोक जनवदे जी, स्टेट सेक्रेटरी मध्य प्रदेश स्टेट, सर, इन पंक्तियों के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ मंच पर कि आशाहीन हृदय में तरंग भर देती है, छोटी सी उम्मीद निराशा को भंग कर देती है, मुद्दत से आते हैं अतिथि भगवान बनकर, अतिथियों का आगमन मन में उमंग भर देती है। ऐसी उमंग की आशा के साथ मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बेताब हैं आपके उद्बोधन को सुनने के लिए। आइए सर, स्टेज इज योर्स। सर, माइक म्यूट है, आप अनम्यूट कीजिए। जी सर। Hello everybody, are you hearing me? Yes sir, yes sir. Thank you Shalini ji, and first of all मैं अपने इस प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट है मिस्टर शर्मा, और जो रिसोर्स स्पीकर हैं उनको, हमारी होस्ट शिवांगी जी को, और जितने भी इस वेबिनार के आयोजन में जिन लोगों ने सहयोग किया है, सभी को मैं वेलकम करता हूं। इस प्रयास के लिए उनको थैंक्स देता हूं, मुझे इनवाइट करने के लिए भी थैंक्स करता हूं।
Dear participants, today we are going to discuss on SDGs 7 and 9. Okay. मुझे केवल मेरी बेटी मेडिकल कॉलेज में जब थी तो 2-3 साल पहले जब वो सेकंड प्रोप में थी तो उसने एक चीज मुझसे डिस्कस की थी कि पापा यूएन ने गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग का एक कोई बिंदु दिया है, तो उसके बारे में मुझे बताओगे क्या आप? तो मुझे पहली बार पता लगा कि यूएन ने कुछ जो है एसडीजी जो है वो निर्धारित किए हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये जो एसडीजीज हैं दे आर लिटिल इम्पोर्टेंट एंड अट्रैक्टिव टू स्पीक। लेकिन आज का जो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है और इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पे मैं थोड़ा सा अपने खुद के विचार रखूंगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो देश है, हमारा जो कल्चर है, वो दूसरे दुनिया के दूसरे जो देश हैं उनसे अलग है। हम लोग जो है हमारे जो 5 तत्व हैं, स्पेस, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ, these are we accept them as divine elements। लेकिन दुनिया में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी जो अप्रोच है वो मटेरियलिस्टिक होती है, और हम लोग पेड़ों को पूजने वाले, नदियों को पूजने वाले, हमारा अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगा कि मैं ज़रूर इस बात से एग्री करता हूँ कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के लिए हमें ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, थर्मल, एटॉमिक जो पावर प्लांट बने हैं उनके स्थान पर हमें विंड और सोलर एनर्जी पर जाना चाहिए। हालांकि दुनिया उस तरफ जा रही है, लेकिन जो स्पीड होना चाहिए वो स्पीड अभी नहीं है। तो उससे हम एक बहुत बड़ा एक हमारा अचीवमेंट ये हो सकता है कि यदि हम विंड एनर्जी की को एक्सप्लोर करते हैं, यदि हम सोलर एनर्जी को एक्सप्लोर करते हैं, तो हमारे जंगल, हमारी नदियाँ, हमारे ग्रामीण, हमारे पशु पक्षी, इनको हम बचा सकते हैं। ये बहुत तेजी से उजड़ रहे हैं हमारे इस प्रोसेस में। तो निश्चित रूप से अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की यदि आवश्यकता है तो दुनिया को इस तरफ जाना पड़ेगा, जो नेचर ने हमें इतने प्रचुर मात्रा में हमें उपलब्ध कराए हैं। इतनी उपलब्धता है कि यदि साइंस, दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं, यदि वो वाकई इस तरफ लग जाएं तो वो पूरी दुनिया को फ्री में ये एनर्जी उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो केवल अपने उपयोग में आने वाली चीज़ें, उनको उनके हित में जो होने वाले जो काम हैं, जो इन्वेंशंस हैं, उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको जिस प्रकार से उनको सहयोग करना चाहिए वैसा सहयोग न करने के कारण ये जो असमानता हो रही है। अन्यथा एनर्जी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि दुनिया चाहे, जैसे कि यूएन भी चाहे यदि, कि वो इस प्रकार से कोई एक अपना रिजोल्यूशन ले कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो रिच कंट्रीज हैं, उन्हें उन कंट्रीज को मदद करनी है, जैसे कि एशिया के कुछ बहुत पुअर कंट्रीज हैं, अफ्रीका के पुअर कंट्रीज हैं, वहाँ पे यदि वो सहयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट को बहुत आसानी से अचीव किया जा सकेगा। हमारा जो नवा एसडीजी है, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मैं अपनी तरफ से स्पष्ट कर दूं कि जो इंडस्ट्रीज है, इनोवेशन है, मैं बहुत ज़्यादा उसके फेवर में नहीं हूं। आपको आश्चर्य होगा, हम जानते हैं कि 15वीं और 16वीं शताब्दी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस चालू हुई है, लेकिन यदि हम आज देखें तो इंडस्ट्रीज ने किया क्या है? इंसान को एक गुलाम बना के रख दिया है, उसको इतना मशीन जैसा बना दिया है कि हमारी जो छोटी-छोटी कुटीर कुटीर उद्योग थे, छोटे-छोटे काम थे, वो भी सब खत्म हो गए हैं। हम देख रहे हैं चाइना जैसा देश, जहाँ की पूरी इंडस्ट्रीज से वो अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ के इंसान की स्थिति कैसी हो गई है, जो मशीनों की तरह जो है काम कर रहे हैं वहाँ पे। दूसरा, इनोवेशन की हम बात करें
तो इनोवेशन वो होना चाहिए जो हमारे जीवन को, जो हमारी पृथ्वी को प्रिजर्व कर सके, लाइफ को बेहतर बना सके। लेकिन आप जानते हैं इनोवेशन क्या हो रहे हैं, नए नए वेपन्स बनाए जा रहे हैं, नए नए ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं जो कि हमारी पृथ्वी के लिए और हमारे जीवन के लिए डिस्ट्रक्टिव हैं। तो ऐसा आइडिया किस काम का जो हमें बर्बाद कर दे। तो यूएन को ये भी एक इस प्रकार की रेजोल्यूशंस लेना चाहिए कि यदि इनोवेशन नए आइडिया कुछ आना है तो वो किस दिशा में आना है। क्या उनको क्या एटॉमिक एनर्जी या उनके एटॉमिक वेपन्स हैं, क्या इस दिशा में आगे बढ़ना है, इनोवेशंस करना है, या फिर ऐसी चीज़ें जो कि इंसान को एक प्रकार से मैकेनिकल एक मशीन बना के रखते हैं। हमारे सामने उदाहरण है एक जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं सोचता हूँ कि यदि रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई के बाद में दुनिया बचेगी तो अगला जो युद्ध होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही होगा। तो मैं सोचता हूँ कि इनोवेशन को भी एक दिशा दी जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मैं ज़रूर इसके फेवर में हूँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर जीवन बहुत कष्टमय है। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा देश इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात हम करें कि जो 17 एसडीजीज यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन पास करके डिसाइड किए हैं वो काफ़ी नहीं है, बहुत मटेरियलिस्टिक है। उसमें हमारे वे ऑफ लाइफ का कहीं जिक्र नहीं है, उसमें हमारी मॉरल ड्यूटीज के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग की बात नहीं कही गई है, उसमें स्पिरिचुअलिटी को नहीं शामिल किया गया है। तो आपने देखा जाए तो इंसान को ही छोड़ दिया, तो सबके मध्य में तो इंसान ही। तो हमें एसडीजीज वो होना चाहिए जो इंसान के दिल को छुए, उसकी क्वालिटी को बदले। हालांकि इसमें से बहुत सारे पॉइंट शुरू के और अभी हैं ऐसे, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि ये कंप्लीट नहीं है। इन्वायरमेंट को इन्होंने टच नहीं किया है, तो धरती को बचाने की बात नहीं कही है, धरती के ऊपर जीवन, पानी के अंदर के जीवन की बात कही है। लेकिन हालांकि हम आज 7 और 9 के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, और मैं वाकई शुक्रगुजार हूँ कि भारत स्काउट एंड गाइड ने इन विषयों को लिया है और इसके प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये डिस्कशंस रखे हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि आम जनता में कोई अवेयरनेस इस प्रकार की नहीं है। इवन मैंने 2-3 लोगों से कल बात की थी कि एसडीजीज के बारे में तो किसी को इसकी जानकारी नहीं। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी केवल एक बार जान पाया था, बाद में मैंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये एक ऐसा विषय है जो ग्लोबल है, लेकिन प्रत्येक कंट्री के अपनी लोकल परिस्थितियों के अनुसार इसमें इस प्रकार की प्लानिंग की जा सकती है। और हम अपने परिस्थितियों के अनुसार क्या कर सकते हैं, हमारे रिसोर्स के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, वो निश्चित रूप से एक गाइडलाइन के तौर पे हमें कुछ गाइडेंस मिलता है। लेकिन जब तक कि दुनिया के सारे जो रिच राष्ट्र हैं, जो डेवलप राष्ट्र हैं, वो यदि ये ठाने नहीं कि पूरी दुनिया में हमको ये ग्लोबल चेंजेस लाना है और हमें उन लोगों की मदद करनी है जो गरीब है, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, तो इन एसडीजीज का कोई मतलब नहीं। ये मेरा अपना सोच है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे एक ऐसा देश है, हमारा देश दुनिया में बिरला देश है, जिसमें आज भी लोग, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ट्रेन नहीं देखी है। हमारा आज यहाँ पे इंसान बैलगाड़ी से चलता है तो रॉकेट पे भी चल रहा है। हमारे यहाँ पे इलिटरेसी इतनी ज़्यादा है, पर हमारे इंटेलेक्चुअल्स और हमारे वैज्ञानिक जो हैं दुनिया के बड़े बड़े जो है अवार्ड प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारा देश बहुत ही विरला देश है। हमें बहुत प्लानिंग करने की ज़रूरत है, ये गाइडलाइन है हमारे लिए। लेकिन जब हम इसके अंदर घुसेंगे तो बहुत ही हमें माइक्रो सब्जेक्ट के अंदर घुसना पड़ेगा और उसको प्लानिंग करना पड़ेगा। हालांकि जो यूएन ने जो गाइडलाइन जारी की है और इसको अचीव करने का जो 2030 का जो टारगेट रखा है, वो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से वो 2030 तक इन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। और मैं ये कहूँ कि जो एसडीजी नंबर 1 है नो पॉवर्टी, 2 है जीरो हंगर, 3 है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो हम कितना अचीव कर पाए हैं इस एसडीजी पर,
उस पर भी एक रिव्यू होना चाहिए और यूएन को ऐसे देशों को कॉल करना चाहिए कि जिन्हें मदद की ज़रूरत है और उन्हें वहाँ पे कौन सी मदद की ज़रूरत है, फाइनेंशियल ज़रूरत है, प्लानिंग के लिए ज़रूरत है, रिसोर्सेस चाहिए। इस प्रकार से प्रत्येक देश के लिए उनको इस प्रकार का एक ऑफर करना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि इसमें यूएन किसी प्रकार का फंड रेज करके और मदद कर रहा है क्या, लेकिन मैं सोचता हूं कि बगैर यूएन के या बगैर डेवलप कंट्री की मदद के ये दुनिया में ये ग्लोबल ये जो एसडीजीज हैं इसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। और अंत में मैं सभी को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आज जो लोग भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं इन विषयों पे वो डिस्कस करेंगे और मैं चाहता हूं कि डिस्कशन के बाद में इसको रिकॉर्ड किया जाए और रिकॉर्ड करके इसको सभी के साथ में पास पहुंचाया जाए। साथ ही जो लोग इस आज के वेबिनार में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि अपने उनके निजी थॉट्स को और उनके जो सजेशंस हैं उसको भी हमें कॉल करना चाहिए। तो हम एक एक पॉइंट पर, एक एक एसडीजी पर हम एक छोटा सा जो है दस्तावेज बना सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। थैंक्स अगेन। थैंक यू शिवांगी जी। थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you, sir. Thanks for such enlightening words. Now, from the bottom of my heart, I would like to call upon the chief guest for today's session, Mr. Prem Prakash Sharma, sir. Please, sir, the stage is yours. आप सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही होगी, अगर आप कंफर्म कर दें। जी सर, आ रही है आवाज। थैंक यू। इस फोर्थ वेबिनार में जिसमें आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 2.7 नंबर और 9 नंबर पे डिस्कशन कर रहे हैं, इस पे इनवाइट करने के लिए शिवांगी सक्सेना मैडम को बहुत सारा धन्यवाद। और मेरे साथ गेस्ट के रूप में उपस्थित हैं अशोक जनवर्दी जी, साथ ही रिसोर्स स्पीकर के रूप में सुप्रीत बालाजी हैं, और जो सारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं मैं आप सबका वेलकम करता हूं छत्तीसगढ़ भारत स्काउट गाइड की ओर से। और हमारे जो स्टेट चीफ कमिश्नर हैं विनोद सेवनलाल चंद्राकर जी, उनकी ओर से भी मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ये जो विषय आज लिया गया है इस फोर्थ वेबिनार में, जिसमें 7 पॉइंट है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी और 9 पॉइंट है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम मोटे तौर पे देखें तो एसडीजी के जो सारे 17 पॉइंट्स लिए गए हैं वो सारे पॉइंट्स एक वेब के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम एक हिस्से पे काम करना शुरू करते हैं तो वो हमारे दूसरे हिस्से को जरूर अफेक्ट करता है। अगर हम इंडस्ट्रीज पे काम करते हैं तो वो लोगों की इनकम से जुड़ता है, वो जाकर के आपके पॉवर्टी से जुड़ जाता है, और जब उसके पास पॉवर्टी ठीक हो जाती है तो एक गुड हेल्थ की तरफ भी जाता है। तो ये चीजें सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मैं एग्री करता हूँ अशोक जनवर्दी जी जो उन्होंने बात कही कि हम भारत के लोग कुछ अलग इन्वायरमेंट से हैं। हम पेड़ों को पूजते हैं, हम अपने आसपास के जानवरों को पूजते हैं, हम अपने पशु पक्षियों को पूजते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम उसी दिशा में जाना चाहते हैं जिस दिशा में आज विकसित देश हैं। और विकसित देशों की ओर से ये प्रयास इसलिए किया जा रहा है कि जो गलतियां उन्होंने करी अंधाधुंध विकास की दौड़ में, जो उन्होंने किया, उससे कहीं ना कहीं उनके अपने एनवायरनमेंट को जो हुआ और उसके साथ साथ वो इफेक्ट आने वाले समय में विकासशील देशों की ओर और अविकसित देशों की ओर भी जाएगा। तो एक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो काम करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने डिसाइड किया है वो इसलिए भी है कि जो देश उन समस्याओं से जूझ रहे हैं उस तरह की समस्याएं पूरे विश्व में ना हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। और भारत जैसे देश के लिए एक चुनौती इसलिए भी है कि उसको अपने लोगों के साथ अपने लोगों को आगे भी बढ़ाना है, देश को भी आगे बढ़ाना है, और उसको एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में भी लेके जाना है। साथ ही साथ उसके साथ इन बिंदुओं का भी ध्यान रखना है कि ये चीजें भी किस तरीके से हम कवर कर सकें। इसमें जैसे कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के विषय में है, तो ये तुरंत जैसे ही हम इस पे बात करना शुरू करते हैं ये तुरंत जाकर के 9 पॉइंट के इनोवेशन से जुड़ जाता है। क्योंकि जो अभी कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स अवेलेबल हैं
वो एक निश्चित लिमिट तक ही हम उपयोग कर पाएंगे जो प्रकृति ने हमें दिए हैं। तो हमें कहीं ना कहीं उन चीजों को ढूंढना पड़ेगा जिनका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं और वो हमारे पास प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है। जैसे कि जन्मेजय साहब ने बताया कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और खास तौर पे हमारे देश के बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे हवा उस स्पीड से बहती है जिस स्पीड से हमें विंड एनर्जी की लिए जरूरत है। खासतौर से इवन छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पे हम इस पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा देश में भी कई ऐसी जगह है जहाँ पे इसमें काम किया जा सकता है। बेसिकली हमारे यहाँ इन सारी चीजों के लिए ये मान लिया जाता है कि सारी चीजें सरकारों को करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ी एक चुनौती है हमारे बीच में, जहां हमारे इन्वॉल्वमेंट होने की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं उस तरह की चीजों को परचेस करना या फिर उन चीजों को बनाए जाने को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये शॉर्ट टर्म नहीं है। क्योंकि थोड़ा इसमें समय लग रहा है और थोड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट भी लग रहा है, तो उसके कारण से लोग इस तक जल्दी नहीं पहुंच रहे हैं। मतलब हमारे अपने घरों में लगभग हम सबको पता है कि सोलर कुकर से आसानी से एक छोटी न्यूक्लियर फैमिली का खाना बनाया जा सकता है, बट हम उस रिसोर्स को यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एलपीजी परचेस करना ज्यादा प्रीफर करते हैं, या गैस, या फिर हम केरोसिन यूज करते हैं, या फिर जंगलों को काट के लकड़ियां इस्तेमाल करते हैं। जबकि सोलर कुकर का इस्तेमाल करके आसानी से हर फैमिली थोड़ी थोड़ी कन्वेंशनल एनर्जी बचा सकती है। यहाँ पे हमारा इन्वॉल्वमेंट शुरू होता है भारत स्काउट गाइड के रूप में, कि हम लोगों तक इस बात को लेकर के पहुंचाएं कि उनके छोटे छोटे योगदान किस तरीके से उनको एक बड़ा लाभ दे सकते हैं। अगर हम एक कल्पना करें कि अगर देश के बहुत सारे घरों में हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके दिन में एक टाइम का भी खाना बना लेते हैं, तो आप ये कल्पना करिए कि हम कितनी गैस का बचत कर पाएंगे पूरे देश के हिसाब से देखा जाए। और भारत बहुत सारी चीजों को आयात करता है दूसरी जगहों से, हमारे पास सोर्स भी लिमिटेड है। इन परिस्थितियों में ही हमारा इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होता है। और ये एसडीजी को भारत स्काउट गाइड ने इसीलिए लिया है कि इनके बारे में हम लोगों को अवेयर कर सकें और लोगों तक इस बात को पहुंचा सकें कि क्या छोटी छोटी चेंजेस हैं जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं और जिससे एक बड़े पिक्चर में बदलाव संभव होगा। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ स्काउट गाइड के जो संरक्षक हैं और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस पे उनके नेतृत्व में काम शुरू हुआ है। अभी छत्तीसगढ़ में जो गौठान एक कल्पना की गई है जिसमें बायोमास गोबर को परचेस किया जा रहा है 2 रुपए पर केजी में, और उससे हम जो है वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। इससे 2 चीजें हो रही हैं। एक तो जो देश पे मतलब जो फर्टिलाइजर है उसके आयात करने को लेकर के जो एक्सपेंस पड़ता है, उसके अलावा उसको प्रोडक्शन को लेकर के जो कन्वेंशनल एनर्जी लगती है उसको हम नेचुरल तरीके से उपयोग करके एक तरह से हम बायोमास को फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, जो कि जैविक खाद के रूप में है। और इसका उपयोग हम अच्छे से छत्तीसगढ़ में कर पा रहे हैं और उसमें हमें सपोर्ट भी मिल रहा है किसानों का। जहां मैं अभी पोस्टेड हूँ कोंडागांव, यहाँ से पास में एक जिला है दंतेवाड़ा करके, सदर्न छत्तीसगढ़ में। दंतेवाड़ा जिला जो है वो जैविक कृषि के लिए जाना जाता है। उस पूरे जिले में आपको खाद की एक भी दुकान नहीं मिलेगी। वहाँ पे सिर्फ हम जो है बायोमास से इन चीजों से जो हम खाद बना रहे हैं उसका उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी जो चीजें हैं, जो एक प्रयास है। अभी छत्तीसगढ़ में अप्रोक्सीमेटली लगभग 200 के आसपास बायोगैस प्लांट स्टेब्लिश हो रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जो उसके आसपास हैबिटेशन जो है उसके उन लोगों की जो फ्यूल की जरूरत है, कुकिंग फ्यूल की, उसको वो एक सप्लीमेंट कर देगा। उसके अलावा अभी दुर्ग में और रायपुर में 2 जगहों पे गोबर से बिजली बनाने के लिए भी प्लांट स्टेब्लिश किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो प्रयास हैं वो सरकार की ओर से तो किए ही जाएंगे, बट इसके साथ ही साथ हमारा इन्वॉल्वमेंट एज अ भारत स्काउट गाइड के लोग होने के नाते हमारा होना चाहिए कि हम लोगों तक पहुंचे, लोगों तक जो छोटी छोटी चीजें हैं उसमें उनको कन्वर्ट करें, तो शायद हम इसमें बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि
हमारा ये सेंट्रल और वेस्टर्न रीजन जुड़ा हुआ है। इसमें खासतौर से पंजाब और हरियाणा वाला एरिया है। इन क्षेत्रों में पशुधन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। उसके अलावा इन क्षेत्रों में जो गेहूं वगैरह की कटाई के बाद जो उसकी पराली और बाकी चीजें बचती हैं वो पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। उसको किस तरीके से हम जो है उपयोग कर सकते हैं इस एनर्जी जरूरतों को पूरी करने के लिए, इस पे शायद हमें कुछ इनोवेशंस की जरूरत होगी। उसमें थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम उपयोग नहीं कर पाते। आप में से कुछ लोग दिल्ली के आसपास से भी जुड़े होंगे, उनको मालूम है कि ठंड के आसपास में पराली को लेकर किस तरीके से वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब पोल्यूशन को लेकर के जिस तरह से दिक्कत होती है, फॉग क्रिएट होती है। तो उन चीजों पे इनोवेशंस की जरूरत है। तो इसमें भारत स्काउट गाइड से जुड़े हुए जो हमारे बच्चे हैं, जो अलग अलग लेवल पे हैं, कुछ कॉलेजेस में हैं, कुछ स्कूल्स में हैं, और हर साल आप देखते होंगे कि इनके साइंस एग्जीबिशंस होते हैं। तो शायद ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं वो इन बच्चों को इन चीजों पे सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। बेसिकली हम एक मोटिवेशनल एजेंट के रूप में हैं, और हमको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा कि ये दुनिया की जरूरत है। ये जो गैस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप आसानी से 1000 रुपए पे करके जो एक सिलेंडर उठा के लेके आ रहे हैं, ये कई सालों से प्रकृति ने इसको बनाया है। तो इसकी जगह सूर्य का प्रकाश हमें इजी वे अवेलेबल है, हम क्यों ना जो है वो सोलर कुकिंग पे जाएं। और अभी काफी चीजें इसमें हो चुकी हैं और काफी चीजें अभी की जानी बाकी हैं। उसी तरीके से अगर हम लाइट के लिए लेकर के देखें तो बायोगैस से भी उस तरह की चीजें करने के बारे में कोशिशें हो चुकी हैं। तो हम इसको छोटे लेवल पे, जहाँ पे बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे इन चीजों को लेकर के जाएं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लंबी जमीनें हैं जो बंजर हैं, जहाँ पे कोई चीज नहीं उग सकती है। उसमें भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारें भी आपको अनुदान वगैरह देती हैं। तो उसमें हम किस तरीके से सोलर प्लेट स्टेब्लिश कर सकते हैं और किस तरीके से उस एनर्जी को हम बेच भी सकते हैं, मतलब इस पे भी काम हो रहा है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन देखेंगे तो उसमें कई एकड़ जमीन पे अगर आप उस तरीके से सोलर प्लांट लगाते हैं तो उसमें कुछ सब्सिडी भी अवेलेबल है। उसके अलावा उसको हम वापस ग्रिड में भी जोड़ करके बेच सकते हैं। और ये इस तरह की स्थितियां राजस्थान के कुछ इलाकों में, छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया में ऐसे हैं जहाँ किसानों के पास बड़ी जमीनें हैं बट उसमें खेती नहीं कर सकते। लेकिन उसमें उन इलाकों में चूंकि सोलर लाइट भारत में पर्याप्त समय हमको मिलता है, 10 से 12 घंटे की लाइट हमारे यहाँ सूर्य से मिलती है। तो उस 10-12 घंटे में हम कन्वर्ट करने के लिए किस तरीके से प्रयास कर सकते हैं, इन सब चीजों पे शायद हमें आज जुड़ने की जरूरत है। और भारत स्काउट गाइड इसलिए जुड़ा है कि ये जो बच्चे इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाले 10 साल बाद यही बच्चे कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे, यही बच्चे कहीं पे साइंटिस्ट होंगे, यही बच्चे कहीं किसी और ऐसी जगह पे होंगे जहां ये लोग इस चेंजेस को लेकर के आ सके। जो लोग अडल्ट स्काउट या सीनियर जुड़े हुए हैं वो उनके ध्यान में आता होगा कि जब आज से 10 साल या 15 साल या 20 साल पहले जब ये बात इन्वायरमेंटल स्टडीज के बुक्स में पढ़ते थे कि नदियां सूख जाएंगी, अच्छे से उत्पादन नहीं होगा, तब हमको लगता था नहीं ये तो सब बस ऐसे ही इन्वायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं। बट अगर आप रूरल एरिया से होंगे तो आपको जरूर याद होगा कि जिस नदी में गांव के आप जाकर के स्विमिंग करते थे, अब वहाँ स्विमिंग के लायक पानी नहीं बचा है, जबकि ये सब आपके और हमारे देखते देखते हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एसडीजीज इसलिए बनाए गए हैं कि हमारे देखते देखते और चीजें ना हो जाए। तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो इस पे जरूर विचार करें। खासतौर से इंडस्ट्रीज का जो सेकंड पॉइंट है उसमें मैं आना चाहूंगा कि इंडस्ट्री जो है, जैसे ही हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम सिर्फ सोचते हैं कि एक बड़ी सी चिमनी निकल रहा हो और बहुत सारी चीजें जो है वो ज्यादा संख्या में बन रही हो। बट कहीं ना कहीं जो महात्मा गांधी जी का सपना था कुटीर उद्योगों को लेकर के और ग्रामीण भारत के विकास को लेकर के काम करने के लिए, उसमें थोड़ा सा हमें काम करने की बेहद जरूरत है। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में छोटे छोटे सेंटर्स डेवलप कर रही है। इसमें ये है कि गांव की जरूरतों की जो चीजें हैं उनको हम गांव में अगर प्रोडक्शन कर पाएं तो एक तरह से हम लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे और साथ ही साथ हम
उन लोगों को जो बाहर से चीजें आ रही हैं उससे शायद हम लोगों को भी बचा सकते हैं। जैसे एक छोटा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि जैसे हमारे इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास पोला का त्योहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है, जिसमें हमारे जो कुम्हार हैं जो मिट्टी के काम करते हैं वो लोग बहुत अच्छे सुंदर खिलौने बनाते हैं, जिसकी पूजा करके हम वो त्योहार मनाते हैं। बट बाकी पूरे टाइम हम प्लास्टिक से खिलौने खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर हमको थोड़ा काम करने की जरूरत है कि चीजों को कैसे छोटे छोटे तरीके से हम एक बड़ी इंडस्ट्री में डेवलप कर लें। तो इन चीजों पे हमें काम करने की जरूरत है और इस पे सोचने की जरूरत है। और खासतौर से आपके यहाँ पे जो ग्रामीण विकास के लिए ग्राम पंचायतें काम कर रही हैं, वहाँ पे भारत सरकार जो है 15 फाइनेंस में और बाकी चीजों में भी ठीक ठाक रिसोर्सेज दे रही है। तो उन चीजों पे भी हमें पहुंचना चाहिए कि हम अगर ग्रामीण क्षेत्रों में स्काउटिंग कर रहे हैं तो हमें अपने पंचायतों से जुड़ना चाहिए। आपके सरपंचों से बात करिए, वो लोग भी आपको इन चीजों में थोड़ा सपोर्ट जनरेट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमारा काम है अवेयरनेस पे काम करना, और ताकि आने वाले समय में वो ना हो जो आज विकसित देश जिस चीज को महसूस कर रहे हैं। तो इनोवेशन इससे जुड़ा हुआ है। आप जितनी नई चीजें बनाएंगे, नई तरह की चीजें बनाएंगे, वो कहीं ना कहीं हमको एसडीजी के जो 15 गोल हैं उनको अचीव करने में मदद करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो सभी भारत सरकार, राज्य सरकारें सभी काम कर रही हैं, रूरल डेवलपमेंट भी काम कर रहा है। तो इसमें भी हमें लोगों को बताने की जरूरत है कि किस किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हम काफी अच्छे से बना सकते हैं। अभी अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो एक तरह का फ्लेक्सिबल स्कीम है जिसमें नरवा करके है, जो नदी को लेकर संबंधित है। इसमें हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, जो नदियों में जो बहता हुआ पानी है उसको कैसे धीरे किया जाए और उसको कैसे रोका जाए, और साल के दूसरे समय में बरसात में पानी ज्यादा होता है, फिर उसके बाद हम उसको रोक के कोई बहुत बड़ा बांध बना करके कोई डुबान क्षेत्र बनाने की बात नहीं हो रही है, केवल जो बहता हुआ पानी है उसको स्लो करने के बारे में हम काम कर रहे हैं। तो इससे हम क्या हो रहा है कि जो उस नदी के आसपास के जो लोग हैं उनको हम सब्जी वगैरह उगाने के लिए पर्याप्त पानी दे पा रहे हैं। तो इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और इन चीजों पे हमें भी जुड़ना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। साथ ही जो आपके रिसोर्स स्पीकर हैं वो शायद आपको और ज़्यादा डिटेल बता पाएंगे। और शिवांगी मैम, आपको थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ से जोड़ा, और मैं आप लोगों को सुनता रहूँगा। हो सकता है मैं वीडियो में अवेलेबल ना रह पाऊँ, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे अतिथि जनपदे सर और शर्मा सर ने जो बात कही, मैं उस विषय में ही आगे बढ़ रही हूँ। सर हमारे स्काउट गाइड, रोवर रेंजर और यूनिट लीडर एसडीजीज पर अपने अपने क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। बस अब देर है इन एसडीजीज को जन जन तक पहुंचाने की। तो उसके लिए इस दिशा में भारत स्काउट गाइड नेशनल हेडक्वार्टर ने अपना कदम बढ़ा दिया है। हम बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं हम बहुत जल्दी इन एसडीजीज पर काम करके रिजल्ट दिखाएंगे। भारत में भी अंतर दिखेगा। हमारा भारत जो महान था वो फिर से महान बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा, ऐसी हमारी आशा है और ऐसे हम जरूर उद्देश्य में सफल होंगे। और अब जिस पल का हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को इंतजार था, एसडीजी नंबर 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एसडीजी नंबर 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर बात करने के लिए हमारे रिसोर्स स्पीकर श्री सुप्रीत बालाजी, रीजनल यूथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इन पंक्तियों के साथ आपको स्टेज समर्पित करती हूँ कि उद्दाम सदा बनती पथ में लहरें, पर्वत निज गौरव में इठलाते, रेगिस्तान में चलते चलते सिकता में नागफनी उग जाते, मंजिल पर बढ़ते पथिक अपनी राह बना लेते हैं, तूफानों में चलकर भी सुरभित सुमन खिला देते हैं। ऐसे हमारे सुरभित सुमन खिलाने वाले सुप्रीत बालाजी, हमारे यूथ आइकन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। और अब मैं यह मंच आपको समर्पित करती हूँ। आइए अपनी बात रखिए। Thank you so much, Shalini ma'am. Thank you so much, everyone. And if I could get the sharing rights, screen sharing rights, so I can share my screen, host.
Yes, done. Yes, thank you so much. Okay. So today we will be discussing more about SDG number 7 and SDG number 9, and why it has taken the importance of the whole SDG 17 SDG goals. And we had two great speakers who are giving their guest of honor and the chief guest, who gave their good and very good insight on why SDGs are required and what is the necessity. And where we know that in the past previous three webinars, you've all seen 1, 2, 3 and SDG 13 and 15. So SDGs is something which is built and which is designed in a unique way, which was started by the United Nations in 2015. And to be specific, on the September of 2015, it was started. Why was SDG started? Because the United Nations felt that the countries who are there in the backdrop, who could not grow towards economically, who could not come towards in a sustainable living way, because we are living in the 21st century and we want things to be more sustainable, we want things to be more affordable, we want things to be more economical, something which is available for everyone. For that to happen, that development goals are there. And moreover, SDGs is a place where every countries are putting their friend foot, may it be India, may it be the United States, or may it be even Russia or China, whichever country, they're giving their 100% towards the sustainable development goals, because they see the future in SDGs. Why do they see the future in SDGs, and why is SDG so important, and why do we think 7 and 9 are the key towards all the SDGs that are there? So when you think about the whole SDGs, it is interlinked. As Ashok sir told, the SDGs is interlinked and it plays its own role. Like our own body, if you are eating your food, you'll be eating your food and you're taking your food in your hands, and then you'll be eating with your mouth and you'll be chewing with your teeth, and then it goes to your body, it goes to your digestive system, stomach, and there's a process for it. And every part of your body plays a role. So if you want to see a developed country, or to see a country towards a more sustainable way, then you need to make sure this SDGs is playing. So it is an interlink. It is an interlink between the whole. It is an interlink between all the SDGs. So SDG 1 to SDG 9 as certain. So we'll go in depth about SDG 7 and 9 and why it has got that importance. So first one is SDG 7. And what is the goal and why is it so important? So SDG 7 ensures access to affordable, reliable, and sustainable modern energy for all. So what happens here is you have to see the wordings here, precise wordings. Why have they put affordable? Something which everybody can afford, even people from the rural or even the urban areas can afford. So what is that particular energy that is accessible to, that is affordable for even rural areas and urban areas, to everybody, may it be tribals, may it be the people who are living in the cities, or even in the people who are living in the rural areas. So affordability, then reliability. Can it be relied on? We see the reliability on solar panels, wind energy, on coal and thermal plants, which was a past. But now when you're talking about sustainable energy, then coal and thermal plants doesn't have any say in sustainable energy or giving a sustainable, because it is affecting the nature, it is polluting the nature. And we can see, as we were not able to contribute much towards SDG on this particular way, now we can see different governments putting their step forward for SDG 7, may it be having the largest solar panel plant in the whole world in India. So there is the largest solar panel plant, there is the one of the largest wind power plants that is going to be built, all those things. So this is what we are going to see. If we are going to see somewhere towards sustainability, we have few options of solar panels, wind turbines, or may it be even biogas, some things even which is natural gas. All these things are towards the sustainability, and that is what the goal 7 thinks about. And goal 7 has
the energy that we use to power our lifestyles should be at the cost of Earth. By reducing the use of highly polluted energy sources like coal and thermal plants or nuclear energy sometimes, we'll be going away from the renewable energy, like non-renewable energy we are going. So that will affect the climate and in turn will promote non-cleaner air and promote towards non-affordable way of living. So for that to not happen, we need to make sure we are using affordable and clean and sustainable sources of energy. So it will help to reduce climate change, promote cleaner air and work towards more affordable energy for all. So when you see the wordings here, you can see the interconnection between SDGs. When you talk about reduce climate change, there is an SDG number 13 called climate action. So where you're working on climate action from working on SDG number 7. And then comes promote cleaner air and work towards more affordable energy. Cleaner air, you're talking about life above land, life on land. You're talking about no poverty, all those things. So when you're talking about clean energy, every SDGs are interconnected. And you will see a little more about how SDGs are interconnected and what role it plays in the next slides. So there is some of the statistics that I would like to press, the issues that we work on, that we think it is necessary. More than 1 billion people in the world do not have the access to electricity, and countries with sufficient electricity face dual challenges of rapid growing energy demands and concerns for the environment. If there is an increase in innovation, like we are using a lot of smartphones, Zoom calls and Google Meet calls over the past 3-4 years because of the COVID challenges, because we got adapted towards it. And when we got adapted towards it, we started using a lot of electricity, a lot of energy. But what happens is in some places, you don't have this particular energy. And especially due to the recent survey, we could see 1 billion people. That is a very huge number of people. That is not a small portion of people. That is a very huge number of people who are facing the access of not having safe and clean electricity. And this, if you are not doing this, most of the things are nuclear powered, which is reliable, low carbon energy sources, which many countries are now considering or adopting towards part of their energy for the sustainable development goal number 7. So this is what SDG 7 talks about. And when you talk about SDG 7, there is sub goals for SDG 7. It is not only 17 goals that we are looking, that United Nations has given. We are looking at 169 targets that United Nations has given. So we should not look this 17 goals as a goal that is like simple, telling that if you talk about safe and clean energy, it's not only about having solar plants or having wind turbines, telling that you'll have only solar plants and only wind turbines, and then you will be able to achieve that particular goal. No, it is not only about this particular target. When you're installing a solar plant, you're working on different areas of SDGs, and it might affect directly or indirectly towards another SDG, or it might help another SDG. So to understand that, they have given an in-depth detail about inner targets. That's what 17 goals will be split into 169 targets. So in each goal, there are number of 3 to 10 targets that are there. So in SDG number 7, there are 5 targets with subsections there. So target number 1, universal access to modern energy. The word modern energy gives you the new term, which talks about not only solar and wind, but talks about nuclear energy, talks about energy from thorium, energy from different materials that is not affecting the earth, that is helping the nature, and that is helping the country's economy to grow and even helping the needs of the people. So the modern energy, that is the requirement. Now we can see the modern energy, something like to generate electricity from plastic.
Many countries are working on to generate electricity from plastic. Many countries are working on to generate electricity from human excreta, human waste, from the waste of human bodies, from the waste of animal bodies. So all these things are something which comes with new innovation, something which comes with new infrastructure, something which comes with new technology, the new brains. And where do you find these new brains? We find these new brains and new technology with young people. When you see the whole population of the world, we have more than 40% of the people who are below the age of 35 to 40 years. And why do we consider them young people? Because they have the mindset of 21st century. And why do we need the mindset of 21st century? Is because we are the future. And people tell young people are the future and you need to work on different aspects. But my belief is young people are not only the future leaders, but they're the leaders of present. And when you become the leaders of present, you work on targets and goals like SDG 7 or other SDGs. So moving forward, for SDG 7, target number 2, increase in global percentage of renewable energy. What is renewable energy? Renewable energy is something which is not affecting your nature. By making it pure, by making sure that whatever you're taking from the earth, you're giving back to the earth. Whatever you're taking from your mother nature, you're giving back it to it in the same way, but not harming it. There is a very, very good saying that Lord Baden-Powell has given us. When you go to your place, make sure you leave the place the same as it is or make it much better. So that is the place where comes here towards renewable energy. And talking about target 3, double the improvement in energy efficiency. Now we see renewable energy. When we talk about renewable energy, solar panels, wind turbines has a very, very low efficiency. Low efficiency in the sense, every day, every time you might not have sunlight for solar panels to work, and every time you might not have wind to make sure the wind turbine rotates and generates electricity. So to improve the energy efficiency, what kind of innovation, what kind of infrastructure that we should give, and how the governments take impact. And not only the governments, SDGs are not only for the governments, but it is even for the common people. How young people and common people can take action is what we will be talking much more in the future slides and future in the coming days, in the coming hour. So the next target, the 7.A, talks about promoting the access to research, technology, and investment in clean energy. When you talk about this research, technology, and investment in clean energy, we are talking about SDG number 9, that is innovation, infrastructure. Why do we need all these things? If you want to do a research and you want to have a new technology, you need to innovate. You need to have the technology. You need to have that mindset. You need to have that infrastructure. You need to build that. So that is indirectly or directly connecting to SDG number 7. We'll talk more about that in the future slides also. Next, talking about SDG 7 target B, expand and upgrade the energy services for developing countries. Why is this particular target given? When you talk about expanding and upgrading the energy services, we are talking about how we can put in innovation, technology towards this energy, surplus energy. In many places we can see there is a lot of energy fluctuation. That is morning 7 to 9 there will be electricity, and then 9 to 12 o'clock there will be no electricity because of few other government works or few other works. To make it surplus, to make sure the energy is there for 24/7, that is what it's talking about. Expand and upgrade the energy services for developing countries. So this is what the SDG 7 target 5, top 5 targets talks about. Moving on, we will be talking about some facts and figures so that you'll understand why this is necessary. So 13% of the global population still lacks to modern electricity. And I know, I think you would have understood the word modern electricity, what modern electricity means. And the next fact talks about 3 billion people rely on wood, coal, charcoal, or animal waste for cooking and heating. Yes, we are talking few parts of the country, India itself.
India is relying on wood, coal, charcoal, animal waste in the rural places. It is very true. We are keeping our traditions intact. We are keeping our ancestry history, what we have learned from our uh, past, what we have learned from our previous leaders or previous parents or ancestors. But we have to adopt. When we are adapting to smartphone, when we are going to the global situation, we are making sure this is not affecting the world. At previous times, it was okay to use all these things because this was not the need of the hour. Why this is the need of the hour? Why is SDG, the 17 SDGs taking a lot of impact? Why is it? Because we are seeing the increase in temperature. We are seeing uneven rainfall. Nowadays, when our ancestors told that the rainfall will come only during this particular months, and we used to find out rainfall was that, and temperature was only this much, and this was our cultivation cycle. But now the whole thing has changed because of the use of uh, unutilized use of all these mother nature experiments that we've taken: wood, coal, charcoal, animal waste. So this is affecting the nature in one or the other way, and this is forming the climate change. And that is why SDG number 13 is affecting from this particular SDG. If we don't achieve this SDG, then SDG number 13 is indirectly affecting them. So moving for the next points, energy is the dominant contributor for climate change. I was just telling that point, and accounted for 60% of total greenhouse gas emission. It is very much important to make sure when you're living in a place, you make sure you live in a safe place, you live in a secure environment, you live in a place where you are comfortable. If you are in such a way, if you're in a house, you don't make your house dirty. You clean your house every day, you wash your plates every day, you make sure you are living in a safe space. That is what is happening. If you don't have a safe space, if you don't have a place to live, then where will you live, and where will you put forward your traditions, where will you put forward your learnings from your ancestors? You don't have a place to stay, you don't have a place to live, you don't have a place to work, then you don't have a place to follow your traditions. And that is why SDGs are important. And that is why SDG 7 is the most important SDGs. So indoor air pollution from using combustible fuels for household casualties. These are a few of the facts, and you can get enlightened from this and make sure that you can start your own projects. Okay. To achieve the affordable and clean energy, we have 6 indicators. Indicators are something which, it's like if you're riding a two-wheeler, it shows that if your petrol is empty or full, that is when you need to fill your petrol tank. You need to fill your tank, telling that, okay, I need to fill so that I can reach my goal. So these are some of the indicators for SDG 7. So SDG 7 has 6 indicators, and first indicator is to proportion of population with access of electricity. India is a very huge country with more than 150 crore people and more, and we are the second largest populated country in the world. And to have access of electricity to everyone, it is one of the biggest targets that the government of India has taken, and which they are achieving in a very fast rate. And you can see in the past 20 years or 30 years, you can see the increase in the number of people who are getting access towards electricity. And then the next, proportion of population with primary reliance on clean fuel and technology. Here also it talks about how we can improve on solar panels, or improve on technologies that can be used in your household, that is installing solar panel, installing small turbines, using towards renewable sources of energy. So these are a few points that you can find out. The next one is renewable energy share in total fine energy consumption, and how international flows of GDP falls on, and how developed countries are helping developing countries for renewable energy production, including the hybrid system. So these are 5 points that the government can take care, but it doesn't have much of the impact for common people to work on SDGs, or common people or young people to work on SDGs. Okay. What's the goal here? I told it is affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all.
Why should I and you care about this goal? For many decades, we have seen the non-renewable part, that is the fossil fuels, coals, oils, gas, being one of the most major sources of electricity production. And this in turn is helping the environment pollution. We can see this pollution with the increase in death, with the increase in heart attacks. We can see many people having problems in their health, the environment getting degraded. We can't see a lot of nature now. Only few states, few places there is huge forests. There are huge reconstruction of forest, afforestation that is happening after a lot amount of harmful impacts on the people well-being and the environment. This affects everyone, not only just a few. If you're talking about okay, it's okay if you do coal and thermal plant in one particular place and you make it a barren land, only it affects only India, or it affects only that particular country. You're wrong. You're very, very wrong. It affects the whole globe. It affects the whole world. It affects the way of living. It affects the way you're going towards sustainable living. It affects your crops. It affects your economies. It affects your agriculture. It affects each and every sector. So that is what it is important. In a nutshell, without a suitable and stable and economic electric supply, countries will not be able to power their economies. They can't come to a developed stage. We can still be calling developing, but we can't come to a phase of developed stage. So that is what is important. So we'll use this small infographic structures. So which situation is more suitable, the top picture or the bottom picture? You can use your chat section to share which picture, is it the top picture or the bottom picture, is more suitable for this particular SDGs. The first top picture talks about having coal, the woods everywhere, and the bottom picture use about clean and affordable and modern energy, which is more talking about sustainable and SDG 7. So you can use your chat section. Okay, I see few of the answers coming. The bottom pictures, the one with the yellow color, modern energy. Somebody is selling modern energy. Very nice. The bottom picture. Yes, Preeti Anand tell bottom picture. Bhavini tells bottom picture. Very true. It is the bottom picture which talks about affordable and clean and which talks about SDG 7. Okay, let's move to the next slide. Which one do you think which has the situation of more of SDG 7 and which one should we work on? Polluting indoor, having most of the people killed because of the wood that we are using, or to use renewable clean energy like solar panels, to use like wind panels. Which one is more important, the bottom picture or the top picture? Okay, I see some of the chats. Obviously the bottom picture, investment in renewable energy. Wow, so many answers. Okay, it is correct. It is the bottom picture, and it is true. It is the bottom picture itself, because you can see the difference here. Okay, next, the same. Which picture talks more about an SDG 7? The bottom picture, correct. It is the bottom picture itself. So I hope you could have understood what SDG 7 in a nutshell is and why it is important. In the future slides, we'll talk about how we can contribute, how scouts can contribute, and how you can show your SDG progress. So before going to that, we'll find out how SDG 7 is interrelated. As Sir told, and as I'm telling again, each and every SDGs are interrelated. So SDG 1, when you talk about SDG 7, it is influencing SDG 1 of no poverty. And when you talk about no poverty, that means you're directly talking about zero hunger. And when you talk about decent work and economic growth, then you're directly talking about no poverty, zero hunger, good health and well-being. So all these things, it is not the 17 goals that we're talking about.
we are talking about 169 targets, which are the true essence. It is not the body that we are talking about, it's about the heart. That is, we are talking about purity, that is, we are talking about 169 goals. So that is important. So all the SDGs are interrelated, and you can see that in this particular slide. In the next slide, we'll be talking about SDG 9 and why it is important and why it is playing a crucial role. So SDG 9 talks about building a resilient infrastructure, promote inclusive and include the sustainable industrialization and foster innovation. You all might have been very, very shocked to see that sustainable, promotion, these are the words that you are able to see in each and every SDGs. That is the main target of SDG in the SDG 2030 target, to have a sustainable living. To have that sustainable living, you need to make sure you have a resilient infrastructure. You promote and include sustainable industrialization and foster innovation. I believe totally in these 3 points, where industry, innovation, in infrastructure promotes the global market of not only the country, but the whole world. And how we can do it, we will be seeing it in the future slides. The world we live is in changing, and we need to make sure that we are thinking in the future. We are not thinking for the present or the next 2 years or next 3 years or next 5 years. We are thinking about next 200 years, next 500 years of living in a sustainable way. And that is what we are learning from Indus Valley civilization, or may it be the Harappa civilization that is there in the Indian history and mythology, or our ancestors that we can proudly call. They were thinking about the future. Their way of thinking was for 200 years, for 500 years. And we lost that in the path of industrialization. But we need to get back that in creating which is resilient and which is ready for the challenges ahead, as well as ensuring that there is growth, there is industrialization, and there is sustainability. And most importantly, there is human population, and it is not affecting us. So that is what we are talking about this particular goal. Okay, let's move forward for the next slide. As we saw in the SDG 7, there were 5 targets, and SDG 9 has how many targets? It is having 8 targets, 5 and 3 sub-targets in the subsection A, B, C. So target 1, I'll be going in a very brief, I'll not bore you guys with a lot of information about targets. So SDG target 9, number 1, to develop sustainable, resilient, and inclusive infrastructure. And a structure which is affordable for everyone, a structure which is therefore inclusive for everyone. Talking about inclusiveness, we'll talk more about why it should be inclusive in the next target. To promote inclusive and sustainable industrialization. So in this picture, you can see a female infographic, one with the person with wheelchair, a male and one more female. Why are we talking here? We are talking about inclusive, that means inclusive to everyone, may it be male, may it be female, may it be the person who is handicapped. For everyone, this should be the place where you can go work. Industrialization does not mean only giving to people who are physically fit. It means to give targets, it means to give jobs, it means to give decent work and economic growth for not only those people, for everyone in the country. So that is what we are talking about the target 2. The target 3 talks about increase in access to financial services and markets. When we are talking about markets, it is an important role. We are talking about people. We are the people who are buying stuff. We are buying products, may it be from wheat, may it be from rice, may it be from even buying laptops, lights, mobile phones, even our cup holders, whatsoever. Basic necessity needs that we require. Everything is from the market that we are buying. And that market should have financial services to make sure it is affordable for everyone. It doesn't mean that everybody, there is a market
To give an example, there is a market of mobile phones which is booming. We have iPhones, we have Samsung phones, we have different phones from different companies, may it be Realme, may it be Xiaomi, may it be Nokia, may it be Microsoft, anything. There are a variety of things, but it depends of the people economic growth, how people are going towards what they want, what is their need, that is what they're buying. Everybody doesn't want to buy iPhone, everybody doesn't want to buy a Samsung phone, but their aim is to buy a Samsung phone or an iPhone. That is what, to make sure it is economically available to everyone. And to make sure that is happening, we need to have decent work and decent jobs. And for that to happen, we are coming back to infrastructure, we are coming back to innovation. So that is what the whole circle is. It talks about SDG 1 to 9 to 7 to 8 to all SDGs, and it comes back to SDG 17. It comes back to whole circle. And that is why when you see the SDGs logo, it is a circle with multiple colors in it. So that is what we are talking about, going in a circle. And the next SDG, target 9, in SDG goal 9, target 4, we are talking about upgrading all industries and infrastructure for sustainability. We have a previous infrastructure which is already there, that is there for our previous needs, that for coal, thermal plants, but now we need to improve it. We need to upgrade it to the latest technology. We can't tell that we are old-minded, we are coming from our old civilization, we'll follow our ancestors and we'll be like that. You can't be adamant in this particular technology-wise or in this particular modern world. You need to update yourself. How much ever you update, it is not necessary, it is not right, because there is something new technology that is coming every day. It is like a smartphone update. You will be getting that update notification every 2 months, 3 months, and your efficiency of the phone increases. And that is what requires. To increase the efficiency, you need to upgrade all industries and infrastructure for sustainability. And the 5th target talks about enhancing research and upgrading industrial technology. These two targets are very, very similar, and it plays a very crucial role. And the 9th target number 6 with subsection A, you can see facilities to sustainable infrastructure development for developing countries. So United Nations did not leave developing countries. It is not that developed countries have already achieved SDGs, all the 17 SDGs and 169 targets. No, you are in a very wrong perception. The SDGs are there for both developed countries and developing countries. So in this target subsection A, you're talking about development of developing countries and how SDG number 7 or 9 and different SDGs plays a crucial role. The next is support domestic technology development and industrial diversification. When you talk about domestic technologies, there's a very good saying that United Nations and many big leaders of the world talk about. You can think globally, think about the problems of the globe, but act locally. Think globally, you are thinking in a global perspective, you're thinking in the national perspective, you're thinking in a huge way, but you're acting in your locality. That is what SDGs talks about. You can think globally and act locally. That is when you can see the change. And the last subsection target is universal access to information and communication technology. This needs no introduction and this needs no description, because you all know how important the technology and communication aspect of the technology has driven us from the past 2 years because of the COVID-19 pandemic. I see a lot of people in the YouTube, Facebook, and even in this particular Zoom meeting who are in their phones, who are in their laptops, who are listening to this webinar. It is because of this particular communication and infrastructure of information and technology. That is what is required, and I hope we are achieving each and every target in one or the other way. Moving forward, these are few of the facts
and you can see few facts that 90% of the people could not access the internet through the 3G, or we are now in the 4G and 5G technology, but 3G is something which was very much necessary during the 2010s and 2020, 2015 time, and that is a time where you could not see much of the access to it, and 90% of the people could not have the access. But now we can see an increase. We can see only less than 40% of the people who do not have access. That means we're going in the right direction. We're going towards the SDG 9 and we are achieving it. And when you're achieving SDG 9, you're achieving other SDGs also. So keep that in mind always. When you're achieving one particular SDG, you're directly or indirectly achieving other SDGs also. So there are a few other facts and figures that you all can go through, and I'll be sharing this document with Shivangi ma'am so that she can share it with others also, so everybody can see what is the facts and figures, what is happening. So we have seen the goal here, and what I and you can care about this particular goal. What is that importance? It is the inclusive and sustainable industrialization that we can together innovate, and infrastructure can unleash the dynamic competitive economic force that generates employment and income. Most important thing is to have employment, to have income, to make sure you're living a sustainable way, you're having a key role for promoting technologies, facilitating the trade of international development, trade for national development, a trade for your personal development, and enabling the efficiency and the use of the natural resources, and not harming the growth of the, not harming the growth of the Mother Earth, not harming the lives and the standards of living of people and even the Mother Earth. So if industrialization stability, this approach of industrialization stability will have a positive effect on climate change, on an environment, and on human lives. So that is what is necessary. Okay. Moving forward, the same question, which one is the most effective one? Many countries lack basic resilient infrastructure, seeing not having proper roads, saying not having proper infrastructure, or having a good infrastructure with future planning, with planning of the future, talking about in the picture you can see earthquake resistant, flood resistant, cyclone resistant. Which picture talks more? Preeti Anand talks, it is bottom picture. It is the bottom picture. It is the picture with the orange colors. Yes, correct. It's the bottom picture. And I see that you guys are understanding why SDG 9 is important and how we can play a role. And it's the same thing here. It is the bottom picture which comes with innovating to make green infrastructure, clean infrastructure, to make the infrastructure more affordable, more sustainable, more energy efficient, and to reduce their adverse effect on environment. It should not be a barrier for the environment or for the people who are living. So the bottom picture again here talks about SDG 9. And here again, the bottom picture having building a resilient infrastructure to provide a protective livelihood on the environment and natural disaster, to have trees inside, to have some plants nearby, to make sure your surroundings are green and clean, not to simply dig up holes and do each and every new activities. So it is with the government perspective. But we will talk about how young people, that is you and me, that we can give a change towards this particular SDGs. So moving forward, there's a small infographic picture here. We all love paintings. We all love to see all these amazing infographics pictures, because we all love cartoon, right? Everybody loves Tom and Jerry. Everybody loves Augie and Cockroaches, because we were all brought up with Mr. Bean and Augie and the Cockroaches and all those things. And that is why this particular infographic pictures
tells why it is necessary. And I will share this to Shivangi ma'am so that Shivangi ma'am can share it with all the participants here, and you all can go through this particular document. You can even find out in the United Nations. You can go to un.sdg.org and you can find a lot more about this infographic posters, and you can learn much more. Okay, now the most important part, how to explore and take actions on SDGs with the scouting level. So I think you all might have heard about scout.org. Everybody would have heard about scout.org. Everybody would have had an account. If you don't have a scout.org account, I prefer you have one account now. Go to scout.org and register yourself. And after you go to scout.org, you have this particular platform in scout.org for SDGs itself. And that is how Scouts for SDGs came in. And Scouts, we have around 57 million scouts at the present, and aiming for 100 million scouts in the 2023 section of the year. So 100 million scouts take action towards SDGs. That is more than what the government are taking action. It is a small part that scouts can take action. So what you all can do is go to sdgs.scout.org. You can go there and you can see this amazing, colorful web page. And after you go to that web page, scroll down. If you scroll down, you have a place called as Explore the SDGs. All the 17 SDGs are given. If you click on each, if you click on the 9th SDG, Industry, Innovation and Infrastructure, if you click on that, you'll go to a new page which shows what are the SDGs, how you can contribute to SDGs, how scouts are contributing towards SDGs. And moreover, if you have an account in SDG scout.org, and if you have a project which works on industry, innovation and infrastructure, that telling that, okay, I'm having a project to make sure my community will have clean drinking water by promoting, telling them, okay, I will go to door and I will show them how to make sure you're having a clean drinking water, how to make sure you are purifying the water. If you're going outside, or if you're going to some villages, if you are from the villages, how to make sure people are drinking clean water, to have a plant, to have a small plant to gather some amount or gather some funds from the villages or from funds from the well-wishers, and make a small plant or plant of making the water clean. You have charcoals, you have different sedimentation plants, you put the unclean water and you get a clean water. There are many projects that scouts are taking. This is just an example of this particular project that you can take in, and you will have many innovative ideas, telling that you might be from Madhya Pradesh, you might be from Chhattisgarh, you might have some ideas about how to solve this particular problem of industry innovation, or may it be clean water and sanitizing, may it be quality education, may it be having good health and well-being, making sure everybody has an health card, there is a health card, digital health card, or having an Aadhaar card. So this is all the contribution that you're giving to SDGs, directly or indirectly. So now when I'm talking about scout.org and SDGs playing a role for scouts, I'm not talking about SDG 7 and SDG 9. We've finished talking about SDG 7 and SDG 9. We're talking about the whole SDGs as a whole. 17 goals, 169 targets. We are talking about the whole thing and how you can contribute. So this is a small project that you can see, where renovating the damaged roof for school children. It is a very innovative project which talks about no poverty, quality education, and the most important topic, that is innovation, infrastructure, and in industry, innovation, infrastructure, because SDG 9 is very important for this particular, to rebuild the damaged roof of the school children. This is a very good impact that you are creating as scouts, and this can be seen not only in one particular place. You can access this particular, you can get inspired by this particular projects by going to sdgs.scout.org, and you can find many projects, and you can find many projects related to different SDGs and what they can. Now, what should we do? We should be inspired. We should get inspired from what we see, and we should enable that. We should enable in the sense,
if you get inspired, to make your inspiration a reality, you should enable your thoughts, you should enable your processes of implementing what you're doing. In the sense, you should enable the way you are looking at. You should take ideas from different people, you should enable young people the tools, the information, and then you should deliver it to the people. This is what Scouts teaches us, and this is what the World Scouting has given the parent organization, that is the World Organization of Scout Movement of the Bharat Scouts and Guides of the Bharat Scouts and Guides India. The parent organization is WASM, and that is what it shows: inspire, enable, and deliver. And this is what SDGs is all about. Now, how it is a lazy person's guide to saving the world. How a lazy person, you might not be a lazy person, but it is a word, simple word, how you can save the world by doing small actions, and how you can contribute towards SDGs. The level ones that you can think from your couch, that the place you are sitting is to save electricity, to use remaining carbon emissions, to use online bulletins, and to make sure you are sharing what you are doing to your friends, family members, and telling them to switch off the lights, turn off the computer screens when not needed. Ask them to take local action. Ask them to go to the local leaders and tell them this is what they require, this is what they need. If you don't raise your voice will not be heard, and you can't see the action, you can't see the change. And in the level 2, what you can do from home: to eat less meat, to eat less poultry things, to use more of vegetables, to eat more of to become more vegan, to use more of vegetables, to eat a lot of fresh fruits, vegetables, not to eat more of meat, poultry, fish. It is having a different impact to the people, to the nature. And the next one is to replace old appliances with energy efficient. We can't go with the old technology of light bulbs, everything. We have to use the latest technology of LEDs, and to use of not plastic glasses and all, to use ceramic glasses or multiple use glasses. So to compost your food, to use instead of using bathtubs or instead of using showers, you can use half a bucket. So there's something called as half bucket challenge, to use half bucket for using your bath. So all these challenges and sharing these ideas can help you in promoting and help you in giving access towards contributing towards SDGs. And then what you can do in your neighborhood: to bike, to walk towards your school, to not travel in cars, or to not travel if you're alone, not travel in cars. If you're having 5 to 6 people going together, you can use your cars. You can use your public transportation, which is now going towards electric transportation. Take advantage of your right to elect leaders. Elect your right leaders. That is what you can do in promoting SDGs and promoting on sustainability. These are a few other things that you could do in your work, in your school, in your place of work, to raise your voice against any type of discrimination, to buy, to walk or take public transportation, to not to use plastics, to talk about voice, to support the communities who are not able to raise their voice. So this is what the whole thing of a lazy person's guide is. So this is the end of my presentation, and I hope I could all reach out to you and make you understand what SDG 7 and 9 and as a whole the whole SDGs are. So thank you everyone. Thank you ma'am, Shivangi ma'am, thank you Central Region, and thank you the whole MC and the whole team of the national headquarters and hosting team, who's the support team of doing such amazing work and making sure SDGs are reaching to each and every one. And thank you for giving me an opportunity and giving young people and believing in young people. That is what is most important. And I hope we all can work together and we all can achieve the sustainable development goals as scouts, as active citizens of the world, and reach the goals by 2030. Thank you and all the best to everyone. Have a good day ahead. I would request the participants, if any of you have any sort of queries, you can put it up in the chat box. So Preet sir is here to help us out. अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक एंड सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं.
Okay, so I believe it was a great session on that note. Thank you, Supreet sir. It was great listening to you. It was such an informative session, and I hope that we'll make sure to carry forward these learnings and implement in our own lives. So thank you, Supreet sir. Now it is the most exciting time. Let's come up and check how far we have learned about these topics and how far we have acquired knowledges regarding this SDGs topic. So yes, it is the quiz time. I request Dhanraj sir and Shalini ma'am to please come upon and conduct the quiz session. थैंक यू संतोषी। धनराज सर आइए। हमारा क्विज स्टार्ट होता है काहूट पर। आपको www.kahoot.it के थ्रू इस क्विज में पार्टिसिपेट करना है और गेम की पिन है 5115675 5115675। आप सभी काहूट से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं अपने प्लेयर्स का। आइए। और अमित जी हमारे पहले पार्टिसिपेंट्स इस क्विज के, और भी जल्दी जल्दी सभी लोग कनेक्ट हो। www.kahoot.it kahoot.it के थ्रू आप हमारे साथ क्विज से जुड़ सकते हैं और गेम की पिन है 5115675। रंगस्वामी जी, रमेश जी, गुंजन, अमित जी, प्रीति मैम, फरहाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जल्दी कीजिए। आज के इस सेशन में आपने जो भी सीखा, चैट बॉक्स में सभी लिख रहे हैं कि बहुत इम्प्रेसिव सेशन था, बहुत अच्छा लगा अटेंड करके। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने कितना गेन किया है। आइए, हम आपके साथ क्विज खेलने के लिए तैयार हैं। इस क्विज में आपको भी मजा आने वाला है। अभी तक हमारे साथ 9 पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं। आप www.kahoot.it के थ्रू हमसे कनेक्ट होंगे। गेम की पिन है 5115675। धनराज सर, अगर ये लिंक हम शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में तो कर दीजिए प्लीज। अभी हमारे साथ 12 पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं। ये गेम की लिंक आपके पास आ गई है, क्विज की लिंक आपके पास आ गई है www.kahoot.it और गेम की पिन है 5115675। अभी तक हमारे साथ 14 लोग जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा जल्दी कीजिए, वक्त की नजाकत का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर नेहा जी, रंजीत, अनीश, राज जी, सलोनी, कृष्णा जी, भूमि, पूनम, लिली, फरहाद, प्रीति मैम, रंगस्वामी जी, रमेश जी, गुंजन जी, अमित जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास लास्ट 2 मिनट ही बाकी है इस क्विज के साथ जुड़ने के लिए।
2 मिनट में हम अपना क्विज स्टार्ट करेंगे। आपके पास 2 मिनट का समय है, जल्दी से हमारे साथ जुड़िए। www.kahoot.it के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस गेम की पिन है 5115675। आप देख सकते हैं हमारे साथ इमरान जी, काजोल, रंजीत जी, प्रीति आनंद जी, अतिबल जी, नेहा, आयुष, किरण, अंशुमान, मेहरुलाल जी, भवानी मैम, अनीश जी, राज जी, सलोनी, कृष्णा, भूमि, पूनम वर्मा, लिली, रंगा स्वामी जी, रमेश वारिया, गुंजन, अमित एंड सुयस जी शामिल हैं इस क्विज में प्रतिभाग करने के लिए। लास्ट 25 हमारा हो गया है, अभी हम गेम स्टार्ट करने वाले हैं। मैम 30 सेकंड और वेट कर लेते हैं। ओके, हम 30 सेकंड और वेट करते हैं, तो 30 मिनट वेट करते हैं। आइए, और भी जो हमारे साथ जुड़ना चाहें, इस क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहें, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धनराज सर, हम अपना गेम स्टार्ट करें क्या? 1 मिनट और लास्ट वेट कर लेते हैं मैम, क्योंकि उसमें हमारे पास ज्यादा लोग हैं। अब ये लास्ट 1 मिनट हमारी आईटी टीम धनराज सर की तरफ से 1 मिनट में और भी जो लोग जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। पार्टिसिपेंट तो बहुत सारे दिख रहे हैं हमारे वेबिनार में। ये क्विज कोई जीत हार का प्रश्न नहीं है, या ये यहाँ ये भी परीक्षा नहीं होनी है कि आपने क्या सीखा क्या नहीं। बस ये आपका आकलन है, आपने ये वेबिनार अटेंड किया है, इसमें आपने क्या सीखा और क्या आपका बाकी रह गया जो भी आपको और सीखना बाकी है, तो उसके लिए आप फिर और मेहनत करेंगे। तो आप इस उद्देश्य से इस क्विज में पार्टिसिपेट मत कीजिए कि हमें जीतना है, हमारी रैंक लगनी चाहिए। आप पार्टिसिपेट कीजिए अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। आप इस क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए। आपके पास लास्ट 30 सेकेंड होंगे। स्टार्ट करते हैं। तो शालिनी मैम स्टार्ट करते हैं हम। जी बिल्कुल बिल्कुल धनराज सर, हमारा गेम स्टार्ट हो रहा है और 3, 2, 1। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डोमिनेंट कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज? आपके पास 4 ऑप्शन है। समय धीरे धीरे खिसक रहा है। 3, 2, 1। 22 लोगों ने आंसर किया, 11 लोगों ने सही जवाब दिया, एनर्जी कंजप्शन। बहुत बढ़िया। और अब हम स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं और अभी स्कोर बोर्ड पर सबसे आगे चल रहे हैं आयुष जी। बहुत बहुत बधाई आयुष जी को। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे 10 क्वेश्चन है इस क्विज में। हाउ मेनी टारगेट्स आर देयर इन द SDG 7? 3, 6, 7, 5। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 लास्ट। ये हमारे 23 लोगों ने आंसर किया और 6 लोगों ने सही आंसर किया है 5। तो ये हमारा
सेकंड क्वेश्चन था, हम स्कोर बोर्ड देखते हैं और स्कोर बोर्ड चेंज हो गया है। डॉक्टर नेहा जी अभी लीड कर रही हैं 1709 पॉइंट लेकर। नेहा जी लीड कर रही हैं स्कोर बोर्ड पर। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या क्या नहीं आता है? आपके लिए 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है जो सही आंसर है। और 14 लोगों ने कहा है रेस्टोरेंट्स। आपका सही जवाब है। 14 मेंबर्स ने सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। अब हम स्कोर बोर्ड देख रहे हैं। स्कोर बोर्ड तो चेंज होता जा रहा है, हर क्वेश्चन के आंसर के बाद स्कोर बोर्ड चेंज। राज जी हमारे साथ आगे चल रहे हैं 2113 पॉइंट्स के साथ। राज जी स्कोर बोर्ड पर सबसे आगे हैं। और अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, what should be achieved by 2020 according to Sdg Target 9? Provide the least developed countries with. आपके पास चार ऑप्शन है और इन ऑप्शन को में से एक को चूज करने के लिए सिर्फ अब आपके पास 8 सेकेंड है। बहुत बढ़िया, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इतने जल्दी आंसर कर रहे हैं। सही आंसर है प्रोवाइड अफोर्डेबल एक्सेस टू द इंटरनेट। 5 मेंबर्स ने इसका सही आंसर किया है और स्कोर बोर्ड फिर चेंज। देवाशीष जी आप लीड कर रहे हैं। स्कोर बोर्ड हर क्वेश्चन के आंसर के बाद चेंज हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी लीड कर रहे हैं देवाशीष जी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ICT in SDG 9 stands for। सोलह लोग आंसर कर चुके हैं, 5 सेकेंड अभी भी बचे हैं। 20 लोग आंसर कर चुके हैं और टाइम अप। सही आंसर है फर्स्ट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 6 मेंबर्स ने सही आंसर किया है। तो अब हम फिर देखते हैं स्कोर बोर्ड की क्या हालत है। स्कोर बोर्ड नहीं आया सर, चलिए हम शायद थोड़ा आगे बढ़ गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा जल्दी कीजिए। सही आंसर है 1 बिलियन। 8 मेंबर्स ने इसका सही आंसर किया है। अब हम स्कोर बोर्ड देखते हैं। कभी कभी टेक्नोलॉजी है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। अभी भी देवाशीष जी आगे चल रहे हैं, बहुत बहुत बधाई देवाशीष जी को। और अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका 7th क्वेश्चन है। According to SDG 9, failure to improve technological innovation could translate into। लास्ट 3 सेकेंड और आपका समय समाप्त होता है। हम देखते हैं 19 लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। ये मुझे लगता है पहला ऐसा आंसर है जिसमें ज्यादा लोगों ने सही आंसर किया है, ऑल एबव। अब यहाँ कंपटीशन टफ हो गया, लेकिन देवाशीष जी अभी भी आगे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8th क्वेश्चन हमारे डैशबोर्ड पर। According to SDG 9, failure to improve technological innovation could translate into। और 8 मेंबर्स ने इसका सही आंसर किया है। हम स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा स्कोर बोर्ड? और स्कोर बोर्ड चेंज हो गया है। डॉक्टर नेहा जी लीड कर रही हैं
4617 पॉइंट्स के साथ। डॉक्टर नेहा जी बहुत बहुत बधाई। और अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर 2020? दस सेकेंड, 5 सेकेंड और समय समाप्त। आंसर सही है, सोलर पावर्ड स्टील मिल्स। और सिर्फ 2 मेंबर्स ने इसका सही आंसर किया है। हम देखते हैं कौन से वो 2 लोग हैं। स्कोर बोर्ड दिखाइए सर। डॉक्टर नेहा, आपने सही आंसर किया है, बहुत बहुत बधाई नेहा जी को। और अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर हैं। विच प्रोडक्ट कंटेन पेट्रोलियम? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्विज का। अभी तक 13 मेंबर्स आंसर कर चुके हैं। लास्ट 5 सेकेंड, जल्दी कीजिए। 2, 1, समय समाप्त। और अब आंसर भी आ गया है, प्लास्टिक बैग। 13 लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। हम स्कोर बोर्ड की ओर चलते हैं। और अब हमारा ये फाइनल स्कोर है। 3rd नंबर पर है देवाशीष जी, बहुत बहुत बधाई देवाशीष जी को। 2nd नंबर पर है सलोनी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और 1st नंबर पर है डॉक्टर नेहा जी, बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियां नेहा जी के लिए। इस 4th क्विज में आपने पहला स्थान प्राप्त किया, आपको बहुत बहुत बधाई। और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई, आपने इस क्विज में भाग लिया। और एक जो आपने ये वेबिनार अटेंड किया, उसमें आपने क्या सीखा उसको दर्शाया। निश्चित कहीं कुछ चूक हो सकती है, टेक्नोलॉजी है, कहीं छूट जाते हैं, हम जल्दी आंसर नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Congratulations. I hope you all enjoyed the quiz to the fullest. Congrats, you all played extremely well. As we all know that this is not the end. This is a series of informative sessions where we are every time surprised by presence of such great personalities. For your gentle reminder, I would like to say that this webinar or this series of webinar happens on 2nd and 4th Wednesday every month. The upcoming 5th webinar is on 13th of April. Hope you all will join to gather such great informations and wonderful knowledge. I would request that the feedback form will be shortly given in the chat box. Kindly fill it up as soon as possible because it will be just for 20 minutes. I can already see that the feedback form have been given in the chat box. I request all the participants, please fill it up as soon as possible. हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ जूम प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं या जो हमारे यूट्यूब व्यूअर्स हैं, चैट बॉक्स में आपको फीडबैक फॉर्म की लिंक दे दी गई है जो कि 20 मिनट तक ओपन रहेगी। तो आपको फीडबैक फॉर्म भरना है, इस लिंक पर जाकर आप अपना फीडबैक फॉर्म भरिए, तभी आपको इस वेबिनार का सर्टिफिकेट मिल पाएगा। तो जल्दी कीजिएगा, वेबिनार खत्म होने के तुरंत बाद ही आपको ये फीडबैक फॉर्म भरना है। ये लिंक आपको दी गई है चैट बॉक्स में, आप फीडबैक फॉर्म जरूर भरिए। Now, I would like to call upon Ms. Sivangi Saxena ma'am, Assistant Director, Central and Western Region, for the vote of thanks. Please, ma'am, the stage is yours. Thank you, Santoshi. Good afternoon, everyone. Namaskar, Sat Shri Akal. Honorable Chief Guest, respected Shri Prem Prakash Sharma ji. Honorable Guest of Honor, respected Shri Ashok Janbade ji, and all the participants, attendees, or YouTube viewers. It is such an honor for me to get this opportunity to thank you all dignitaries. So first of all, on behalf of the Bharat Scout and Guides and on behalf
of the President, Bharat Scout and Guides, Chief National Commissioner, Bharat Scout and Guides, and the entire family of the Bharat Scout and Guides National Headquarters, I extend sincere thanks to the people in the gathering. I would like to express my gratitude to all the esteemed delegates of the webinar for their presence and contribution to make this webinar a grand success. I extend my gratitude to our Honorable Chief Guest, respected Shri Prem Prakash Sharma ji, Chief Executive Officer, Jilla Panchayat, Kondagaon, Chhattisgarh, as well as the State Commissioner Scouts, Chhattisgarh State Bharat Scout and Guides, to take out time for from his busy schedule and to grace the event. Thank you for inspiring and encouraging us with your words on this special day. I really extend my sincere thanks to you, sir. Thank you so much, sir. I would like to thank our honorable guest of honor, respected Shri Ashok Janvadeji, State Secretary, Bharat Scout and Guides, Madhya Pradesh State, for his precious presence and for providing immense support to make the webinar successful. Thank you so much, sir. I must thank to the today's resource speaker, Shri Supreet Balaji, Regional Youth Representative of Asia Pacific region and rover from Karnataka State Bharat Scout and Guides, to share wonderful information in a very simple way about the Sustainable Development Goal 7 and 9. Thank you so much, my dear Supreet Balaji, for your hard work to make this webinar successful. I'm thankful to the Director, Bharat Scout and Guides, our Executive Director, Joint Directors, Deputy, all the state officials of the Bharat Scout and Guides for their support and cooperation to organize this type of webinar. Thank you so much to one and all. I must congratulate to all the participants and our YouTube viewers for their active participation. To all the attendees and YouTube viewers for your support and cooperation. Thank you so much. I must thank to the mistress of the webinar, our nearest and dearest Mrs. Shalini Jain ji from Madhya Pradesh and Miss Santoshi Singh from Southeastern Railway to host the webinar in such a great manner and with full energy and attractive way. Thank you so much, dear, and congratulations to both of you. Thank you. I would like to thank Mr. Siddharth Mohanty, Project Officer, Bharat Scout and Guides, Mr. Dhanraj Saini, Office Secretary, Central and Western Region and Junior Instructor, Mr. Jahangir Basa, and all the organizing team and volunteers for working hard for the past few days to make this webinar successful. Thank you everyone once again for making it a great success. Thanks to one and all. थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम अपने इस वेबिनार के अंतिम पड़ाव पर हैं। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से किया जाता है, तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान शुरू। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता,
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। विश्राम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारा यह वेबिनार समापन की ओर। हो विफल क्यों साधना आराधना परिपूर्ण हो तो, हो विफल क्यों यज्ञ कोई प्रार्थना संपूर्ण हो तो, हो लगन सच्ची हृदय में लक्ष्य ही स्वागत करेगा, क्या करे कोई यदि संकल्प ही भ्रमपूर्ण हो तो। संकल्प को पक्का कीजिए, लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुट जाइए। ऐसी भावना के साथ हमें अब यह वेबिनार समाप्त करने के लिए धन्यवाद। Thank you all for sparing your precious time. I hope you enjoyed, you gathered information in this webinar. I hope that we'll meet once again on the 5th webinar with same enthusiasm and spirit. On that note, I would like to say once again that the feedback form is just present for 20 minutes.